I'm too nervous today and I'm having so much stress these days. That's why I'm getting too much hair fall and pimples too. So please don't judge me by my looks. While making this video, I'm 17 years old and I'm currently studying in 12th standards. हमारे boards आने वाले हैं. I just finished my prelims and now I will be having pre-boards. We have 2 prelims this year. Unlucky batch. So बहुत ज़्यादा stress है इन दिनों and that's why I thought to bring such type of video. I'm here again with a new video with talking to you all guys about the problems faced by every student right now. I'm going to highlight like almost 7 things that I'm facing as a student and I do think कि बहुत सारे लोग ये face कर रहे होंगे. So without wasting much time, let's start with the first one. So the first one problem that everyone is facing currently is distraction. And I know guys it's the massive problem. तो ये तो सब लोग ही फेस कर रहे होंगे. The main reason for distraction can be social media apps that we all have on our phone from day one. And हम क्योंकि ये फ़ोन पे हैं हमारे सारे apps तो हम अपना like for peer pressure हम accounts बना देते हैं and then we get distracted so much. Like literally we know that the main source, like reliable source for distraction is Instagram. We literally do boom scrolling on Instagram. Like मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम उसी में चला जाता है. I know it, but still we are like doing it even after knowing it. So we are literally living in the world even after knowing कि हमें ये नहीं करना चाहिए, but still हम वो चीज़ें like कर रहे हैं. So distraction is the main thing, and it's not only about Instagram. It can be more other social apps too, even other things like Netflix and other stuffs too for watching movies also. But I think it's better there because in Instagram क्या होता है हम बहुत सारी videos देखते हैं and after watching that many videos we are exhausted. But instead if we watch one movie we are not that much of exhausted, but we just like imply ourselves with a new personality. Like हम movie देखते हैं and we are with the storyline and all that stuff. But in Instagram it happens opposite because there are so many other types of reels, so many other type of topics and all. तो मतलब हमारा सर जो है एक तरह से नहीं रहता है. So we know it but we still are doing it. So this is the most painful thing that we do as a student. And I'm not talking about all the students because there are few students who do not use Instagram at all. And yeah, I'm damn serious. And I think I'm uploading this video on YouTube. तो mostly बहुत ज़्यादा students होंगे जो like NEET aspirants होंगे या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पास goals होते हैं. So most of the students don't use Instagram. So salute to you guys because I have an account I had created when I was in 8th and I'm stuck in it now. So I don't want to exaggerate anything. Now let's come to the second point of stuff which is a biggest problem, which is the pressure. It can be peer pressure or family pressure. As we know that all our parents expect us is 90%. Like उन्हें होता है. And the main मैंने like देखा है students who score less, like वो average from the start like first standard तब नहीं, तभी तो हम score करते हैं, आराम से कर देते हैं. बट आई थिंक फ्रॉम 7th 8th 9th तो उस समय अगर कुछ ज़्यादा बच्चा लाइक स्कोर नहीं करता, सो दो students don't have much pressure. They have, but still if they score like 80 or 90% their parents will be so happy. But the students like us, like when I was in 8th I scored 90% and that mark remained with my parents. So they were expecting from me 90% even when I went to 9th standard. I think 9th में मैंने 82-3 something score किया. So that was a disappointment thing for my parents but not for me because I know after age by age studies become too hard and it's too difficult to score at that point of time. 8th standard में होता था because it was easier, it was too easy. Like what we studied that only comes in exam. तो बहुत ज़्यादा easy होता था. Even in 10th I got 80%. Even after studying so much I saw like so many PYQs ये सब कुछ किया and I got 80% and that is okay for me because I opt for commerce. तो yeah, in 11th it got little less. तो in 12th अभी मुझे देखना है कि कितना मिलता है and the competition is too tough. Even that can be the reason for us not scoring well. मैं स्क्रोलिंग और स्कोरिंग में कंफ्यूज हो रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड थिंग विच इज स्लीप. आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू स्लीप. हमारी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड आई नो. या सो द थर्ड एंड फोर्थ मैं आपको कंबाइन करके बताना चाहती हूँ. सो स्लीप साइकिल ख़राब हो चुकी है. ड्यूरिंग एग्जाम्स तो वो होती है बट इवन इन नॉर्मल डेज लाइक
आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वी आर टू एग्जॉस्टेड, लाइक आई स्लीप इन आफ्टरनून, उसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती. सो टिल 2 or 3 o'clock आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर. सो द फोर्थ थिंग इज ओवर थिंकिंग. साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड ऑल, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं. एंड इवन व्हेन आई टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई लर्नड फ्रॉम अदर्स, नॉट दी वन, लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग लाइक दिस. तो मैं जस्ट अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ओके, सो व्हेन आई से ओवर थिंकिंग, इट कम्स मेनली बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. आई एम लिटरली सो स्कैर्ड, पता नहीं क्यों, because of the competition. As you know, the population of our country is so much. We are the most populated country in the world right now, and it's getting worse in the job market. मुझे मतलब ऐसा लगता है कि even after doing all this studying and all, मुझे जॉब मिल पाएगी या नहीं. So that kind of stuff goes on thinking in my mind, and that can be the main reason for me for my distraction and demotivation for studies. But अभी ऐसा हो चुका है, इफ़ वी डोंट स्टडी वी वोंट गेट एनीथिंग, एंड इफ़ वी स्टडी देर आर ओनली फ्यू चांसेस टू गेट समथिंग. सो इन बोथ द ऑप्शंस वी आर स्ट्रगलिंग. तो हमें स्टडीज़ तो करनी ही है, बट ऐसी करनी है ताकि हमें कुछ जॉब या कुछ ऐसा सोर्स मिले ताकि हम कुछ अर्न कर सके. And that's why I started YouTube channel also, but still it's not going really well. Let's see what happens. So ये बीच में like ऐसा लगता है कि YouTube भी नहीं चल रहा. Then after studies, how will I get job and I will start earning and all. So there are lots of stuff like going in my mind. I'm so worried. As you can see, I'm sweating up right now. Like I'm just thinking. I constantly think about it. तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एंड आई रियली डोंट वांट इट. इवन व्हेन आई एम स्टडिंग इट हैपन्स. दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू शेयर. इवन व्हेन आई स्टडी, तो सपोज अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ एंड समटाइम्स आई फील एग्जॉस्टेड एंड आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग, फिर से ये सब कुछ सोचने लगती हूँ. तो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन के वजह से भी ये सब कुछ होता है. एंड या फिफ्थ थिंग इज कंपेरिजन. द मेन एंड मोस्ट वर्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग इन माई लाइफ इज़ ओवर थिंकिंग एंड कंपेरिजन. मैं कुछ भी कर लूँ, बट दिस टू थिंग्स आर देयर विथ मी. लाइक दे आर नॉट ब्रेकिंग अप विथ मी. आई जस्ट डोंट वांट दिस टू थिंग्स. ओवर थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, एंड कंपैरिजन के बारे में भी वही. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट कंपैरिजन. आई कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट टू अदर्स. लाइक लिटरली इट मे बी फिजिकल thing, it may be about my studies, it may be about my confidence, anything. I literally compare, and because of that I do worse in my stuff. But I was not that kind of person literally when I was in 8th. So one day I was just thinking how I scored 90% when I was in 8th. मतलब अभी क्यों मैं इतना कर पा रही हूँ, या उतना लाइक मोटिवेशन किधर गया है एक्चुअली. So main thing I can say it is because of Instagram, because when I was in 8th, like ending में मैंने Insta डाउनलोड किया था. Yes, so that can be the reason. Because of social media we compare ourselves a lot. We know that all that stuff we see on social media are of filtered and only 10 seconds of their happiness. Even they are struggling with their own problems, but still we compare ourselves. So बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है. प्लीज़ डोंट डू इट. आई डू इट. इवन आई नो आई एम टेलिंग यू टुडे, बट आई विल कंपेयर माई सेल्फ. सो हैज़ यू नो गाइज, आई कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट. सपोज अगर मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया एंड इफ़ आई गेट ओनली 20-30 व्यूज, आई विल बी सो सैड. इवन आफ्टर नोइंग दैट इट्स ओके, आई पुट माई एफर्ट्स, मैंने अपना 100% दिया फॉर मेकिंग द वीडियो, एडिटिंग द थंबनेल, doing my best. It literally improved my communication skills too, but still I will compare myself. I will be like, why others are getting so much of views with less effort. ये सब कुछ मैं सोचने लगती हूँ, and because of this I start overthinking. So ये comparison से overthinking तक चला जाता है, and because of this I'm affecting my health. I'm literally telling you guys because you can see my face. Like अभी जब मैं बोल रही हूँ, I'm also thinking so many things. तो ये सब कुछ हो रहा है because that's the reason I sweat a lot. And I am having pimples too. So yeah, this is the reason I am having pimples on my head. मतलब मैंने देखा था अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो पिम्पल्स आते हैं इधर. How I was so good when I was in 8th standard because I scored 90 and I was not comparing myself with anyone.
आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. मैं इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा थी. अभी तो लाइक बात करती हूँ एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़, बट उस टाइम में नहीं बनाती थी और ये बात करती थी. हेयर फॉल, लिटरली माई हेयर इज फॉल. तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी. बट द एडवांटेज वॉज आई वॉज फोकस्ड विथ माई सेल्फ. And yeah, that was the main reason, because I was not seeing how much people are getting, what are their achievements, what are they doing in their life. I was so focused with myself. Even मैंने अपनी ड्राइंग्स देखी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ. So हमें एक ड्राइंग बुक थी in 8th standard and I have seen that my drawings are too good there. But after 9th 10th मेरी ड्राइंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. But it should have to be like improved, right? तो मैं सोच रही थी कि ये इम्प्रूव होने से बजाय ये ग्लो डाउन कैसे हो गया. And it literally triggered me and I realized that I constantly start saying myself कि I'm not good enough, I'm so negative things. तो इसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है and I know the reason. It's just because of me. I started saying worst thing to myself. I literally ruined my teenage age. Most of the people who are single child like me have different experience than people who have siblings, because किनके लिए ना बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा हो जाता है बिकॉज दे हैव एल्डर सिबलिंग्स और नेबर्स जो लाइक वही कोर्स कर रहे हैं. बट इन माई सिचुएशन देर आर नो वन डूइंग कॉमर्स हियर. Like I don't have any neighbor who's still doing commerce or my cousins. I don't have sibling. I'm a single child. तो मेरे पास like इतना guidance नहीं है. But now this problem can be solved because of social media. We can see on YouTube more of the career guidance video. But still, I have seen so many career guidance video. But I don't know why I'm not able to find a proper stuff for me, a proper solution. But I will still see how to figure out that. So that can be the reason. And the last thing that I just want to tell you guys today is the mental health. And I think we are the generation Gen Z. या हमें जेन जी पता नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ बिकॉज आई लिटरली एक्ट लाइक मिलीनियल. मुझे तो जेन जी टर्म्स आती भी नहीं है. सो द पीयर pressure is there, right, to know all that slang words. So let's just not talk about it. Let's talk about mental health. And I know guys, I'm not a psychology student. मैंने साइंस नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता. But the main thing is we have to know how to take care of ourselves. Because I'm telling you guys, just because I had ruined my life. I literally had ruined my life because of the worst thing, which is comparison and overthinking. अगर मैं ये दोनों चीज़ें छोड़ दूँ, then my life can be so good. If you are doing this, please leave it. I know it's too difficult, but if you leave these two things, your life will be so good. As a real student, मैं जस्ट ये वीडियो रॉ और रियल बनाना चाहती थी. आई डिडंट टाइप इन ChatGPT दी स्टफ. मैं नहीं चाहती थी कि कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन लूँ और डायरेक्टली बोल दूँ, ये अच्छे से नहीं होता. आई जस्ट रोट 7 points ऑन माई नोटबुक एंड टोल्ड वॉट एवर वॉज देयर इन माई माइंड. और मैं ज़्यादा पर्सनली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा थोड़ा ही बोला है. And yeah, that's it for today's video. It was a short video where I told you about the problems that most of you and I are facing. And a summary type, okay, so I know we all are facing distraction, we all are facing sleep, broken schedules, we all are facing pressure, we all are facing because of overthinking and comparison. There is no real guidance. ये तो इतना ज़्यादा important नहीं है, किसी किसी के पास होती है. I can get guidance but still I am not able to figure out what I am doing in my life. And mental health, तो अगर हम ये distraction, sleep, overthinking, comparison को ठीक से हैंडल कर दे, then the 7th thing, which is mental health, we can keep our mental health safe and good. Yeah, so I'm done with today's video. I didn't even tell to subscribe, you guys. Okay, so let me just tell, if you haven't joined the family yet of Puri viewers, then you are free to subscribe and join my family. So let's see you guys in the next vlog. Until that, bye.